Okay. Uh, yes, ma'am. We are live now. You can start. Okay, so hello everybody. Today I am going to present to you an overview about Omim. I understand this is one of the topics of bioinformatics that you have in your syllabus. So today's lecture will be about an overview. So first, let us try to understand why do we have the database of Omim? What was the need? So for that, we have to understand that this is all because we had genetics. So we all know Gregor Mendel has been the father of genetics. It was for him that today we have the discipline of genetics, and all this started with the simple experiment of pea plants that he had used to study the inheritance of traits. So that led to the rise of genetics, study of genes, and eventually we have, sorry, okay, so eventually today we have the concepts of genes and genetic phenotypes with us. So genes, as we know, is the genetic info, is the element of DNA that you have that will determine a physical a phenotype in you, that will determine how you look, how you uh, talk, your voice, everything. And through genes, there is this manifestation of genetic phenotypes. So we have so many organisms for human beings for everywhere. So all this information needs to be curated का मतलब it has to be collected and stored. So that is the purpose of all the databases. So if you are studying bioinformatics, database is like your bank. हर कॉन्सेप्ट के लिए या हर स्ट्रीम के लिए एक बैंक है जहाँ पे आपको ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है. सो ओमिम इज व्हाट, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन. Okay, so omim. So for a man, if you have to store all the information of genes, so the primary repository is omim. This is the simple basic concept of omim. Once again, what is omim? Online Mendelian inheritance in man. Okay, so let us try to understand how it came into picture. Online Mendelian inheritance in man, OMIM, it was initiated way back in 1960s. There was this researcher called Dr. Victor A. McCusick. So he was trying to maintain a catalog मतलब क्या? It's like a big file. You have catalog of पेंट्स नाउ, जैसे एशियन पेंट का कलर का कैटलॉग होता है. You go to a hair salon, you have catalog of hair colors. So all the information that is being recorded and stored and curated properly. So catalog of Mendelian traits and disorders, that in a human being he was trying to do research and he was seeing all these information. So he started collecting them as a from a record that started expanding. There were 12 book editions of MIM. So first it was not online. Of course, in 1960s we did not have internet and online facilities. So it was only recorded as Mendelian Inheritance in Man. It was published as 12 book editions from 1966 to 1998. Then eventually it became online. So now we have it as an online database where you can go and search the information that you want. So, as I told you earlier, there has been this conversion of MIM to OMIM, because of the addition of online. So, OMIM was created in 1985. How? This is the collaboration between National Library of Medicine and William H. Welch Medical Library at John Hopkins. So since 1985, at the West there was this on internet and computer science was evolving. So then they started maintaining this as an online record.
So it was made generally available on the internet starting in 1987. So when it came to internet, so anybody could access it. So from World Wide Web, www, as we today we access all the information online. Since 1995, Omim was developed for the World Wide Web by NCBI. So NCBI is what? The National Center for Biology Information. Uh, if you know about NCBI, good. For those, uh, NCBI is the hub for all the biotechnology information stored in the form of bioinformatics tools, databases, um, what you can say, for proteins, for genes. So from 1995, we had OMIM uh, as a component of NCBI. Okay, so this was the uh, background and history. Now, how to access the OMIM home page? Home page means what? जब आप कोई भी database होता है, the first page that you access is called the home page. So how do you reach OMIM? Um, so this is how the NCBI page looks like. ठीक है? I will take you through the slides. Then after this, I will just give you a short demo. We will take this link and go and see how it looks. But first, it is from these slides we will understand what it is about. You can first get the first uh, exposure to information from here. ठीक है? तो NCBI is taking care of it. So here, if you see, if you this is a pop down list. So from all the pop down list, if you see databases, and then if you type OMIM here, so you will be able to access. ठीक है? So this is the uh, uh, first basic method of reaching OMIM through NCBI. Now, after you search for OMIM through the databases of NCBI, you will reach this, that it is going to tell you that go through omim.org. It is the URL, it is the information for going through the OMIM homepage. So here also there is this definition. I think आपके लिए useful होगा, that OMIM is a comprehensive, authoritative compendium of human genes and genetic phenotypes that is freely available and updated daily. ये दो पॉइंट्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो फ्रीली अवेलेबल है कि आपको अगर कोई रिसर्चर है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. सो आपको फ्रीली ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है. और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपडेटेड डेली. मीन्स दैट ये नहीं कि एक बार 1995 में बना के छोड़ दिया, उसके बाद कोई इसमें अपडेट नहीं है. सो गुड डेटाबेसेस वही होते हैं जो टाइम टू टाइम उनको अपडेट किया जाता है, उनके इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता है, और जो रिडंडेंट है या जिनमें कोई एरर्स है उनको हटाया जाता है. तो बिकॉज दिस इज फ्री एंड इट इज बीइंग अपडेटेड डेली, एनसीबीआई जैसे एक कॉम्पिटेटिव, एक अथॉरिटेटिव सोर्स में मिलता है. तो इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि हमें मैन का चाहिए, हमें उसका जीन्स चाहिए, जीनोटाइप्स चाहिए, तो इधर उधर का ज़्यादा डेविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं. तो दीज आर द थ्री or 3 to 4 important features of OMIM that you need to remember. So welcome to OMIM. This is how the page will look. That it is about catalog of human genes and genetic disorders. So यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं. क्लिनिकल फीचर्स पता है आपको, ह्यूमन के लिए phenotypes, genes. Then there is something known as advanced search. If you need help, you have a tutorial here. For every good website repository, you will always you should find out. अगर कोई आपको खुद से आप कुछ पढ़ना है, सीखना है, so अगर आपको उस वेबसाइट का
ट्यूटोरियल्स मिलता है, हेल्प पेज मिलता है, देन दैट शुड बी यूजफुल टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेल्प है, आपको ट्यूटोरियल्स मिल रहा है, एग्जाम्पल सर्चेस हैं, और यहाँ पे आपको क्लिनिकल एडवांस सर्चेस का भी ऑप्शन है। तो दिस इज हाउ द होम पेज ऑफ ओमिम लुक्स लाइक। एंड यहाँ का ये कैप्शन आई फाइंड इट वेरी यूजफुल, ह्यूमन जेनेटिक्स नॉलेज फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, सो आपको ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में जो भी नॉलेज एक्वायर करना है, यू कैन कम टू ओमिम एंड फाइंड आउट। अच्छा, देर आर फ्यू थिंग्स क्राइटेरिया दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, सर्च करने के लिए टर्म्स जैसे जीन्स है, डिजीजेस है, अगर जैसे आप बोलेंगे ब्रैका वन जीन, ऐसा करके नहीं, बिकॉज यहाँ पे जीन्स ही मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं। या फिर डायबिटीज डिजीज, ऐसा करके नहीं, बिकॉज ये बहुत क्या कहेंगे, मिसलीडिंग हो जाएगा, आपको फॉल्स पॉजिटिव्स दिखेगा। तो इसीलिए थ्रू कोड्स आप एकदम फोकस्ड सर्च करिए, जैसे पोटेशियम चैनल है तो उतना ही लिखिए आप। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू सर्च। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग। अच्छा, अब आपको ये वाला कुछ फीचर्स होते हैं जब आप एक डेटाबेस में, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखना है, आपको बहुत लेवल पे इंफॉर्मेशन क्यूरेट खुद को भी करना है, एंड यू हैव टू टेल अदर्स आल्सो व्हाट यू हैव डन। सो देर आर सर्टेन features and characteristics that you need to attribute these whatever the information needs to be well attributed। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, MIM नंबर्स एंड सिंबल्स। तो वो क्या है, क्यों है, अभी हमको देखना है। सो ये एक फीचर है, नंबरिंग सिस्टम यूज होता है ओमिम डेटाबेस में। ईच एंट्री, ठीक है, जीन का हो रहा है, मतलब जो भी एंट्री है उसका एक 6 डिजिट यूनिक, सिक्स, जैसे हमारा आधार है, यूनिक आधार आईडी है, वैसे ही यहाँ का ओमिम एंट्री का भी एक यूनिक 6 डिजिट नंबर है। क्या है, जो वन है दैट विल शो इट इज ऑटोसोमल लोसाई और फिनोटाइप। ठीक है, 1 and 2 will show autosomal loci or phenotypes, entries created before 1994. 3 will tell you it is X-linked loci or phenotypes. 4 will tell you whether it is Y-linked loci or phenotypes, XY of course chromosomes. 5 will tell you mitochondrial loci or phenotypes, and 6 will tell you whether this is autosomal loci or phenotypes. Okay, this is all, this is for entries created after 1994. So this is the numbering system that is being used. Okay. This is another uh, point that you have to understand, because we know there are alleles to genes. You have read that. So if there are allelic variants, so उसको कैसे represent करके या कैसे curate करके रखते हैं, so they are designated by the MIM number of the entry followed by a decimal point and a unique 4 digit variant number। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे एलेलिक वेरिएंट ऑफ फैक्टर 9 जीन, फैक्टर 9 एक जीन है जिसका ये नंबर है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा 6 डिजिट का है। अब ये 3 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक्स लिंक्ड से हो रहा है। ठीक है, दिस इज समथिंग टू डू विथ एक्स लिंक जीन। तो ये 6 डिजिट्स आपके हैं, और इसका जो एलीलिक वेरिएंट है उसको हम, जो मेन जीन है उसका नंबर 300746 इतना, followed by a decimal point and then a unique 4 digit variant number। so इस particular variant के लिए 0001। ठीक है, फिर एक और वेरिएंट है जिसके लिए है 0.0101।
तो हर एक वेरिएंट को ऐसे डेसिमल फॉलोड बाय 4 यूनिट डिजिट से रिप्रेजेंट किया है। तो बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन जेनेटिक्स जीन, सो एलिलिक वेरिएंट्स को भी कैसे अकोमोडेट करना है, उसका भी एक मेथड है, एक डिफाइंड प्रोसीजर है ओमिन में। ठीक है। नाउ व्हाट डू सिंबल्स प्रीसीडिंग MIN नंबर रिप्रेजेंट? प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले। एन asterisk बिफोर एन एंट्री नंबर इंडिकेट्स अ जीन। अगर एक नंबर से पहले asterisk है उसका मतलब जीन है। A number's hashtag before an entry indicates it is a descriptive entry, usually a phenotype, and does not represent a unique locus. Because we know Omim is about genes and genetic phenotypes, तो phenotype will be more descriptive, ठीक है? तो उसके लिए hashtag use करते हैं. Plus sign indicates that the entry contains the description of the gene of the known sequence and a phenotype. माने उस again we are coming back to the gene and उसका phenotype के बारे में भी हमको पता है. And then percent sign, it is before an entry indicates that the entry describes a confirmed Mendelian phenotype or phenotypic locus for which the underlying molecular basis is not known. Up, because all this information that you have on genes and genetic loci, they are coming from experiments. कि कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, कुछ मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन पता है, वहाँ से कुछ जीन्स पता है, उसका लोसाई पता है, एलेलिक वेरिएंट है। तो अगर कुछ ऐसा फिनोटाइप दिखा है, मेंडेलियन फिनोटाइप दिखा है या मेंडेलियन फिनोटाइपिक लोकस का पता है, पर उसका अंडरलाइंग मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब उसका फंक्शनल वैलिडेशन नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को परसेंट साइन से इंडिकेट करके रखा है। तो कैसा इंफॉर्मेशन है, नोन है, नॉवल है, किस लेवल पे है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे सिंबल से आपको पता चलेगा। ठीक है। नाउ अब देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जीन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जीन डिस्क्रिप्शन के लिए आई गो बैक, जो एस्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इतना, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स देखना है कि इतने ऑटोसोमल जीन्स हैं, अगर आपको इसके फिनोटाइप्स कितने हैं ना इतने हैं, फिनोटाइपिक डिस्क्रिप्शंस कितने के लिए प्रेजेंट है, हैशटैग हमने देखा, अननोन का कितना स्टैटिस्टिक्स है, वो कितने, कौन सा एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसा टैबुलर मेथड में आपको पता चल जाएगी। ठीक है। अदर मेनली phenotypes with suspected Mendelian basis, तो दिस इज समथिंग, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि सस्पेक्टेड मेंडेलियन बेसिस लेकिन अभी तक प्रोवन नहीं है, तो वो कैसे है, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, वाई और माइटोकॉन्ड्रियल, हर चीज़ पे आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल मिलेगा ना। अब फिनोटाइप्स किसको बोल रहे हैं, जिसको ये हैशटैग से डिस्क्रिप्शन देंगे, क्या है ना, सिंगल जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड ट्रेट्स, जो सिंगल जीन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, स- उनको फिनोटाइप्स बोल सकते हैं, या ससेप्टेबिलिटीज टू कैंसर एंड कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, सपोज BRCA1 एंड फेमिलियल ब्रेस्ट ओवरियन कैंसर ससेप्टेबिलिटी है, तो इसका ये वाला जो ये जीन को डिस्क्राइब करेगा और ये इसके एलीलिक वेरिएंट्स को। ठीक है। CF8 एंड मॉलिक्यूलर डिजेनरेशन, CF8 से मॉलिक्यूलर नहीं, मैक्यूलर डिजेनरेशन होता है, तो उसका कौन सा एलीलिक वेरिएंट है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस दैट लीड टू abnormal but benign laboratory test values, नॉन डिजीजेस। ठीक है, बिनाइन है, कैंसरस नहीं है, ब्लड ग्रुप्स हो गए आपके, या ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आता है, मेंडेलियन सिस्टम में आता है, तो उसका क्या जीन है, क्या एलेलिक वेरिएंट है, कौन सा फिनोटाइप है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर है सोमैटिक सेल जेनेटिक डिजीज, जैसे जी नास डिजीज हो गया और उससे रिलेटेड मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम, ये एक डिजीज है
या फिर आपको ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोर में एक है, उसका जो एसोसिएटेड जीन है IDH। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सा जीन कौन सी फिनोटाइप या किस डिजीज से रिलेटेड है या उसका वेरिएंट किस डिजीज से रिलेटेड है, ऐसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। सो ओवरऑल अगर आपको देखना है कि ये है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है। व्हेन अ डेटाबेस इज क्रिएटेड, व्हेन कंप्यूटर साइंटिस्ट दे क्रिएटेड, दे मेक अ फर्स्ट स्ट्रक्चर कि हाइपर लिंक से आपको वन पेज टू अदर जाएगा, उसका वेब पेज कैसे लगेगा, HTML पेजेस कैसे होंगे, ये हाई लेवल कंप्यूटर एप्लीकेशन से बनता है। लेकिन ये सब एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, एक आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से होता है, सो दैट वन इंफॉर्मेशन विल लिंक टू द अदर एंड यू गेट द ओवरऑल पिक्चर। So if we look here, Omim will have information on gene entry, it will have information on phenotype entry. This phenotype entry it can lead you to external links. Up again, gene entry can also link you to external links. So यहाँ पे I would like to explain to you that यहाँ पे तो सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और उसके जीन्स एंड जेनेटिक फिनोटाइप्स मैन के बारे में हुआ, लेकिन इससे अगर आपको उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे कौन सा प्रोटीन इससे रिलेटेड है, कौन सा प्रोटीन उसका सीक्वेंसिंग हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फर्दर डिटेल्स के लिए आपको हर वेबसाइट्स में एक्सटर्नल लिंक्स मिलते हैं, माने दे विल टेक यू टू उसका हाइपर लिंक होता है दूसरे वेबसाइट्स के साथ। तो जो डेटाबेसेस ऐसा करते हैं, पहले मैंने आपको बोला जो फ्रीली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो टाइमली अपडेट कर रहे हैं, और जो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक से आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको लिंक करते हैं, ऐसे वेबसाइट्स को ऐसे डेटाबेसेस को अच्छा माना जाता है। तो ओमेम भी एक अच्छा डेटाबेस इसीलिए है क्योंकि हर लेवल पे आपको एक्सटर्नल लिंक्स मिल रहे हैं। फिर जीन एंट्री से आपको एलीलिक वेरिएंट हमने देख लिया कि डेसिमल दे के आपको 4 डिजिट्स करके एलीलिक वेरिएंट्स आ गया। फिर एक जीन मैप आएगा। जीन मैप मतलब क्या है? ये एक टैबुलर समरी है। अब इतना तो हम अगर एक-एक पेज कहीं आपको अगर ठीक से रिप्रेजेंट करके नहीं दिए, तो आपको जो यूज़र है उसको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जब एक टैबुलर समरी अगर हम बना देंगे कि ये रहे मेरे जीन्स, इस जीन से ये फिनोटाइप्स, so it is a good representation. So that is why this information is present and called gene maps. जीन मैप से आपको फिनोटिपिक सीरीज में आ जाएगा। फिनोटिपिक सीरीज मतलब क्या है? ओवरलैपिंग फिनोटाइप एंट्रीज इन देयर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है। अब ओवरलैपिंग फिनोटिपिक एंट्रीज मतलब कैसे? सिंपल में सपोज पर्टिकुलर जीन ए से आपको इट कैन बी लिंक्ड टू डायबिटीज, बट देयर इज अनदर जीन बी जो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज को इन्फ्लुएंस होता है। तो ओवरलैपिंग फिनोटाइप एंट्रीज कैंसर मेटाबॉलिज्म में आपको बहुत सारे जीन्स मिलते हैं। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग होता है तब इसलिए फिनोटिपिक सीरीज में आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर क्लिनिकल सिनॉप्सिस क्या है? देयर इज ये जो फिनोटाइप एंट्री है वहाँ से आपको मिलता है क्लिनिकल सिनॉप्सिस। और अगर आप देखें, फिनोटाइप एंट्री भी आपको जीन मैप में आएगा, बिकॉज दोनों जीन्स और फिनोटाइप मिलके ही आपको ये टैबुलर समरी मिल रहा है। ठीक है। सो जब हम फिनोटाइप एंट्री से हम आ रहे हैं क्लिनिकल सिनॉप्सिस में, इट इज़ अबाउट ब्रीफ स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन linked to be controlled linked to control vocabulary। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ICD, अब यहाँ पे बहुत सारा आपको क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज क्लिनिकल लेवल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशंस है कोई डिजीजेस के। सो वहाँ पे अलग अलग नॉमेनक्लेचर चलता है, बहुत अलग क्लिनिकल वोकेबुलरीज होते हैं जो कॉमन मैन आपको मेरे को पता नहीं होगा, और कहीं बहुत सारे में आपको ऐसा शॉर्ट फॉर्म्स या जिसे कहते हैं अब्रिविएशंस मिलता है। पर वो क्या है, वो वोकेबुलरीज क्या है आपको और जानना है। सो उसका भी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन और एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन पेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये
काफ़ी आपको दिखेगा आईसीडी आईसीडी आईसीडी. It is International Classification of Diseases. So the basic takeaway message is that information that you are receiving is authentic, is genuine, it is updated, and यू वांट टू नो मोर. आप एक लेमैन के लिए पूरी अच्छी तरह से इसको स्ट्रक्चर करके आपको बताया है. ठीक है. ओके. अच्छा, अब एक यहीं पे आई विल जस्ट लेट यू नो एक एग्जांपल. अब मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना है. ठीक है. सपोज मुझे उसका एक ये जीन मुझे पता है कि ब्रैका वन जीन से आई कैन अंडरस्टैंड, या मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर दूं, या मुझे इस जीन के बारे में पता है, ये आईडी मुझे पता है, ये हैशटैग हमने देखा था फिनोटाइप, तो ये कहीं से मेरे को लिटरेचर से मिला है. तो एट फ्रॉम ऑल द थ्री टाइप्स, आइदर फ्रॉम द जीन नेम आई कैन सर्च, और फ्रॉम द फिनोटाइप. हैशटैग तो हमने फिनोटाइप पे देखा था, राइट. यस, फिनोटाइपिक डिस्क्रिप्शन. तो फिनोटाइपिक डिस्क्रिप्शन से भी मैं उसको सर्च कर सकती हूँ. सो this is how you go. अच्छा, हम once I come out of this presentation, we will try to search from BRCA1 and hashtag करके we will see what information we get. अच्छा, जब हमने मेन होम पेज we saw this option of advanced search. So advanced search मतलब क्या होता है, वहाँ पे थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट थोड़े से एडवांस्ड टूल्स मिलते हैं. क्यों? One of the important tools here you should remember is Gene Scout. So what does Gene Scout do? It is a tool to search genomic regions identified by chromosome microarray to show the genes and their associated phenotypes within the regions of interest. अभी क्या है, अभी आपको सीक्वेंसिंग होना है, आपको बहुत सारा सपोज क्रोमोसोमल लोकेशन जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर उसके अगेंस्ट आपको कोई टारगेट्स आइडेंटिफाई करके कोई ड्रग डिज़ाइन करना है, या उसको फर्दर एक्सप्लोर करना है, क्लोन करना है, सीक्वेंस रिट्रीव करना है, तो हमें क्रोमोसोमल रीजन पता होना चाहिए, जीनोमिक रीजन्स हमको पता होना चाहिए. तो एडवांस सर्च में आपको ऐसे टूल्स मिल जाएगा. सपोज मेरे को ये लोकेशन पता है, सो इस में जाके मैं आई कैन फाइंड इट. ठीक है. सो दिस इज द utility for advanced search. Okay. Uh, what has happened to the screen? Okay. So this is the end of the lecture now. ठीक है. So Okay, ma'am. this is the theory I wanted to tell you, where I have covered a little like the basics, the practicals. Now I will take you to this site. I will let's see how to reach, and we will take one example from here, and we will see how we can navigate Omim. After which this lecture will be over. So let us go to NCBI. Okay. So we saw all databases. So let's see what happens if we type Omim here. Okay. So it is asking us to go here. We saw this in our theories slides. So this is a message that you get, that you can make donations to Omim for their better
performance. So here let us see if we uh, take this example. Let's see if we type this. If we type just breast cancer, what happens? Okay. Okay. So here you see these are all the entries. See, it was giving me 82 entries about breast cancer. So we know hashtag means it is going to tell you about the phenotypes. Okay. Uh, uh, this is your asterisk entry. That means it is telling me about the gene, the BRCA1 gene, what it is about. So if I click on this information, so we had studied, so it's going to have six digits. So for what is this is the gene description. So if it is one, so let's go back and find one means what it is autosomal. Uh, where is this? So one means it is autosomal thing. It is telling me about a gene in the full form. Then it is HGNC approved. This gene symbol, the chromosomal location, the coordinates. So which version of human genome that you can find out, and all the phenotypes, the clinical synopsis, everything you will get. Then again uh, in the description, you will understand how this gene has been cloned, all the information, the structures, mapping, uh, what is the function of this gene normally, what happens. So everything about this gene you will try to understand. Then there is something we find in gene graphics here, so we can, this question mark will tell you what it is. So you want to first know what this tool will tell you. So if we can see on the screen, Omim gene graphics depicts relationships between phenotypes, groups of related phenotypes and genes. ठीक है, इसका आपको एक रेफरेंस भी मिल जाता है. So let's see what it is trying to tell us. So there are two forms also, linear and radial. So if we see radial, so radial means what कि ये जीन से मेरे को कौन से फिनोटाइप्स में, जैसे फैनकोनी एनीमिया से रिलेटेड है, कौन सा फिनोटिपिक सीरीज में जा रहा है, कितना नोड्स है, कितना सब नोड्स है, ये इसको पैंक्रियाटिक कैंसर में भी इसको कहीं पे, या ओवेरियन कैंसर का कौन सा जीन से रिलेटेड है. तो ये सारे जो इंटरडिपेंडेंस है ये आपको दिखेगा. और अब इसका एक और ही रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ग्राफ. ठीक है, ये थोड़ा बेटर दिख रहा है, वो तो अजीब सा दिख रहा था. तो जैसे ये ब्रैका 1 है, ये ब्रैका 1 फैनकोनी एनीमिया में भी आपको इम्प्लीकेशंस हैं. देन फर्दर ब्रैका ये वाला फैनकोनी एनीमिया में ब्रैका 2 भी है. सो kind of interdependence and interconnections of between various uh, breast cancer disease, pancreatic disease, आपको ovarian cancer, हर इसमें उसका आपको yeah, and the other genes also like RAD uh, 51, ERCC4, the main genes that are implicated in breast cancer, ovarian cancer. In this way, you can find out. ठीक है, this is something I wanted to show you. And if I go back,
Uh, this is the gene map table that we had discussed. So all the information I can get for breast cancer हमने सर्च किया था, तो ये हमको एक टैबुलर वे में दिखेगा कि कौन सा लोकेशन में अ, कौन से जीन्स एंड लोकस इम्प्लिकेटेड है, वो माइक्रो आरएनए है कि जीन है, फिर वो कौन सा अदर डिजीजेस में भी उसको इम्प्लीकेशंस है, कोई और उसका जैसे कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है और ऑटोसोमल डोमिनेंस है, उसके लिंकेज स्टडीज और हुए हैं कि नहीं, माउस में नोन है तो उसका क्या सिंबल है। तो इससे आप इसको डाउनलोड करके आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर जीन मैप टेबल विल लुक लाइक। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का आपको टैब फाइल या एक्सेल फाइल में कर सकते हैं। इस करके आप इसको फर्दर आपका जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमने दूसरा चीज़ देखा था क्लिनिकल सिनॉप्सिस, ये दिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्लिनिकल सिनॉप्सिस में ऑब्वियसली ये ब्रेस्ट कैंसर में इम्प्लिकेटेड है। अब ब्रेस्ट कैंसर वी नो इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, फिर ब्रेस्ट ओवरियन कैंसर फमिलियल ससेप्टेबिलिटी में कौन सा यूज़ हुआ है। तो कोई भी एक अगर हम उसको इसका देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस इधर है, सो इसका मॉलिक्यूलर बेसिस नोन है। यहाँ पे आपको आई हैड डिस्कस्ड अबाउट एक्सटर्नल लिंक्स, तो इसके क्लिनिकल सोर्सेज कौन से हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हुए हैं, इसके रिव्यूज़ क्या हुए हैं, कौन से एनिमल मॉडल्स में यूज़ हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स, कौन से प्रोटीन्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो यूनिप्रोटिक है, इसका प्रोटीन सीक्वेंस क्या है। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड योर नॉलेज यू कैन डू। तो यहाँ पे इट इज़ susceptibility to familial breast ovarian cancer caused by mutation in BRCA2 gene also, where is the chromosomal location. So the other genes that you would want to focus on, that is also being discussed here. So familial clinical features क्या होते हैं of familial breast cancer, यहाँ पे population genetics, pathogenesis, मतलब extensive curation। ठीक है, अब ऐसा डेटाबेसेस का एक वही टिप है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कैसे दोनों कैंसर के बीच में आपको लिंक करना है। तो जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, जब आप सीक्वेंसिंग करने के लिए जा रहे हैं, या ब्रेस्ट कैंसर इन इंडियन पॉपुलेशन एंड वेस्टर्न पॉपुलेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है। तो ऐसे आपका जब अच्छा डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन रहेगा, तब ऐसा एक्सटेंसिव डेटाबेसेस पे आके यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, फाइंड आउट जीन्स एंड देयर phenotypes, सी द प्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस, फाइंड आउट सर्टेन क्लिनिकल समरीज, ऐसा करके यू योरसेल्फ कैन मेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, so that these are the important things I wanted to show you. Okay, so the Omim lecture ends here. I will share the slides with you and you can keep exploring them. Statistics also I had shown you. uh, this is the updated list. ठीक है, ये टेबल्स कब कौन से मंथ में कौन से कहाँ पे ईयर में हुआ है, एवरीथिंग इज। तो एंड आपको कुछ डाउनलोड करना है इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सो दैट दे अंडरस्टैंड यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन। ठीक है, सो दिस वाज द जनरल बेसिक important overview of OMIM. Kushal, so we can end this recording lecture here. Yes, ma'am. Then we'll take 5 minutes break and then we'll start with the next lecture. Okay? Okay, ma'am. Ah, okay.